We've got films to watch. So we had a chat with Beena, B, Anisha. We were discussing, and usually what happens is that masterclass is a much maligned term. What it does is that it puts one person in the position of the master, and it puts all the other in the position of shishyas. And batao ji hame gyan do. So the thing is, that's not the case here. Most of you are film professionals, and most of you are film watchers. Many of you are writers, many of you are thinkers, many of you are trying to earn money by writing and thinking and taking photos and shooting films or doing production design or writing about films and all that. Stuff that is generally unnecessary for society to survive. So we are the extras. Nobody needs us. If films stopped being made, and if we stopped writing books about films, and if we stopped taking photos, and if we stopped making music, or maybe not music, if we stopped making, taking photos, if we stopped, shooting documentaries, the world will not stop. The world doesn't need us. We need the world to express ourselves and feel some sense of the existence of our egos. So to start from that process, if we accept that we are unnecessary, and we accept that we are random, and if we accept that we are not needed, and in fact we are the least needed, we must start our discussion today from that point of view. Because that takes away the false cobwebs of some kind of a justification of what we are doing. What we are doing is what we want to do. It could be conditioned, it could be from inside us, I don't know, mostly a mix of the two. So we should sort of, for something like a master class or something like that, it's better to avoid all biographical details कि मैंने कब कैसे क्या किया, क्योंकि सबने सब किया है, सबने पापड़ बेले हैं, सबने घिसाई की है, सबने अपनी अपनी तरह से कुछ ना कुछ किया है. So what I would request is that for today's class at least, we should forget the biographical details of my work. As to आपने ये कैसे किया और आपने वो कैसे किया, and how did I get this and how did I find that idea about blah 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 blah, and talk about some film that I've made and all that, because that will we just repeat ourselves. इतना कुछ secret भी नहीं है और मैंने इतनी कुछ फिल्में नहीं भी बनाई हैं. And there are interviews and there's online stuff and all that. What instead we will do is I will start a conversation with 3 or 4 typical problems. Very specific examples I'll give of filmmakers that filmmakers come up against. And by filmmakers I mean writers, I mean film directors, I mean film producers who want to make some film or whatever. I mean anybody who's connected to the process of filmmaking and getting it funded. So we'll start with those 4-5 problems. I would like you to think about those problems. I would like you to do a kind of a what if I were there kind of an exercise and see where we go from there. Problem number 1. You're a writer in Bombay, you're called by a producer, and he gives you a sheet of paper, and it's got, let's say, 32 beats of a storyline. Story beats, सब समझ रहे हैं ना, सब प्रो ही हैं यहाँ पे. मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ, मैं दोनों में फ्लुएंटली बोलता हूँ, और ज़्यादातर इंडिया में जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हें हिंदी समझ में आती है, तो मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ. तो अब बता दो कैसे करना. English. So first problem number 1, you're a writer, you've been called by a producer, good producer, अच्छा producer है. A big upcoming young Bollywood star is attached to the project. तो पैसे हैं, डेवलपमेंट के पैसे मिल जाएंगे, प्रोडक्शन के पैसे मिल जाएंगे. There is a 32 beat story, okay? वो आपको पढ़ाते हैं. Then you say, story works. 32 beat story, सब कुछ है. ये प्रोटैगनिस्ट को ये सब अच्छा लगा, it's all good. You're supposed to write it.
किसी और ने स्टोरी लिखी थी, फिर वो चला गया प्रोजेक्ट से, क्या चली गई। सो उसके बाद प्रोड्यूसर बोलता है कि ये जो 32 बीट्स है ना, इसमें से 15 बीट हीरो ने ओके कर दिए, बाकी जो 17 बीट्स है उनको निकाल दे और अब इन 15 बीट से स्टोरी बना। सो दिस इज द टिपिकल प्रॉब्लम दैट यू हैव टू नाउ सॉल्व। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, इफ यूर अ राइटर अभी करो। इफ यूर अ डायरेक्टर and let us say you're making a film which needs the third gender or which needs a genuine transgender actor or whatever, and you सारे देश की खाक छान के आपने मतलब 2-3 अच्छे एक्टर्स लाके आपने फिल्म को कास्ट कर दिया। So let us say there are 2 transgender protagonists in the film, and you have found out 2 transgender actors for those particular roles, and after fixing them and after checking them and after doing their tests, and you're about to start workshops and start shooting the film, and then the producer says that sir agar ek film mein 2 trans actors aa jayenge to fir film trans लगेगी, तो फिर एक ट्रांस करते, अब उस बाकी रोल में आप किसी को भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। So then now you have to cast a cisgender actor or actress to act as a transgender actress. So that's problem number 2. Problem number 3 is what was problem number 3? Sorry, Anat. Which one? You're a writer and you're called by a very good director कि ये कहानी है and we have to write this film. तो you say कि भाई भेज दो, आपने क्या सोचा है, कुछ कहानी वानी, and the director sends a treatment note. That treatment note is full of videos and still shots made by AI, and there are sort of treatment, by the way of treatment you're going on seeing a certain amount of, how shall I put it, magic realism again and again, a certain amount of special effects again and again, a certain amount of visual splendor again and again, but you're not getting an idea of the story. Fourth problem, you have been developing a series with a showrunner, with a director, with a writer for 14 months. You have been paid your first 2 installments, but not the next 3 installments which should have been paid in those 14 months, because you're writing something, you're sending it to the studio, and the studio is taking 3 months to revert, and then wants you to give re-rendering in 3 days. You've been living that life for 14 months, but you are still sticking to it. That यार ये concept अच्छा है, मेरा showrunner अच्छा है, मेरा director अच्छा है, मैं करता हूँ, उसको कुछ निकल जाएगा. In the meantime, you are moonlighting to ghost write for somebody else because पैसे नहीं है. तो घोस्ट राइटिंग करके थोड़े से पैसे आ रहे हैं, or you are trying to sort of survive some other way, writing for some ad film or some shit like that. All these things are happening in your life. You are staying in a small hole in Yari Road, Versova in Bombay. Those of you who haven't been to Bombay, you will know what it is when you reach there eventually, because पहुंचना तो वहीं है. So you're living there, you're having money problems, you're having existential issues, your rent is sort of getting screwed up, you're fighting your mom who's telling you what the fuck are you doing there, come back here and all that. 14 महीने ऐसे बीत गए, but you still have faith in the project. What happens is that the company and the studio that you're working for suddenly one day gets merged or acquired by another company, which is an international company, which comes from some part of the world which you've never visited, which is peopled by people who don't know that you exist.
and which has done this acquisition or merger for reasons entirely unconnected with your very existence. Now this company has been taken over, and as a result, a new crop of executives have come on board, and now they are sitting on some ideas that have been developed over the last 2 years. And the creative head of the studio comes and sits with you, and you're made to trudge down to the studio. It could be a Zoom call, but you still have to go there, take your auto, pay the money, wait there, go through those security searches in those very, very hi-fi offices in BKC, and then wait for another hour, then walk in. Then the studio creative head walks in very elegantly. Those of you who've seen my film last night, it's a bit like, thank you so much. Those of you who've seen my film last night, it's a bit like Kalki's entrance, So, aake, baithe, how are you doing, and whatever. Then 4 or 5 other people come in, and whatever. Then for the first 45 minutes, you were talking about, let us say, a very good-looking Bollywood hero's baby shower party last night, and certain tears are sort of shed over how cute the couple looked and how lovely it is and all that, and you're falling asleep because you've been writing since 10, 11. Then after that you had a 2-hour fight with your partner. After that you called up your mom and asked for money or whatever the fuck it is, and then she walks in, and then you talk, and 2-3 hours go. And now you're coming to one, and then she says that look, the story the way it is, why are we making this? So, like one of my colleagues has said, he said that because you paid us. So it's kind of unheard of. It's kind of phased over. And then the problem that comes up is that look, you had these 6 characters, okay? We don't believe these 2 characters are necessary. Okay? Can we cut them out of the script? Now then you realize that it's because of those 2 characters, and what they do is why the protagonist is in Mizoram. Now if you write out those 2 characters, then there is no way that the character can go to Mizoram. So you say that, hey, if I do that, then there's no point in the protagonist reaching that place where he kills off that, exotic horror monster. So then the answer comes, okay, fine. Why don't we spend another 2-3 months on figuring out how he gets there? Send us your feedback and we'll do it. And your greenlit show or your greenlit film again goes back into development hell because a completely new team that did not work with you over the last 14 months is now in charge of the destiny of your script. This is one of the problems that you face. Last but not the least is that you, being a canny Bollywood director, want a hit song in the film. Okay? So you call some music director and banate yaar, and get some singer, karte yaar. You record the song, you do everything. Then the music company that has tied up with the producer to contribute money by way of promotion budget into the making of the film says, Basha se gwa lo. It's a female voice, and they say, nahi, isme Basha kar lo. So then you call up Basha wants 1 crore. So then you say कि आप 1 crore दे दो. This is नहीं 1 crore नहीं है. आप इसे गवा लो. So then you go to that other guy. Then this is मैंने एक मेरे को इतना चाहिए नहीं इतना नहीं दे सकते. आप ये करो वो इन्फ्लुएंसर है. उसके आजकल 30 मिलियन व्यूज चल रहे हैं. आप उससे गवा लो. तो आप इन्फ्लुएंसर के पास गए. तो फिर इन्फ्लुएंसर ने कहा कि हाँ मैं गा दूंगा, लेकिन इन्फ्लुएंसर को गाना नहीं आता है. अभी क्या हुआ कि वो जिस तरह से गाता है उसके लिए गाना चेंज करना पड़ेगा. तो फिर आपने लिरिसिस्ट के पास जाकर बोला यार ये गाना थोड़ा चेंज नहीं, आपने म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाकर बोला कि यार गाने का ना कॉम्पोजिशन चेंज कर दो. तो म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला कि यार इसके लिरिक्स है गिट पिट गुड गुड गम गम टिम टिम टम डम 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 व्हाटएवर मैं इसके कॉम्पोजिशन कैसे चेंज करूंगा, तेरे को लिरिक्स चेंज करने पड़ेंगे. सो यू गो टू द लिरिसिस्ट. By that time the lyricist has got COVID. So then you go somewhere else, you find a new lyricist. अभी उस lyricist को advance दिया हुआ है producer ने.
तो प्रोड्यूसर बोल रहा है यार मेरी तो वैसे भी फटी हुई है, मैं उसको कैसे फिर से नया लेवल से लाऊंगा, तू वेट कर ले, उसका डेंगू ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे कुछ, या कोविड ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे कुछ. By that time, the music company comes and says, look, we found a song. And problems are solved, you put this in the film. Now you have to reshoot. Because वो lip sync तो किसी और गाने पे shoot किया था. Abhi that sequence has to be reshot. And then you have to go back to the producer again and producer फिर सब repeat करेगा. So these are, just to sum up, a few of the examples of the kind of problems that all of you will face tomorrow or this evening, because the process of getting films funded is not in your control, and you certainly don't have the money to make those films, otherwise none of us would be here. If we had money, we wouldn't come here. So the fundamental problem of films being made by someone else's money does not go away. That has been there ever since films were made. And in fact, before that, ever since plays were being written, there was a writer, playwright, and there was a producer, and there was always the problem between money and whatever. So that is perennial, that exists forever. But today, post-COVID, post-truth, post-social media, post-influencers, post 3 million, 40 million, 50 million views, there are new dynamics that are directing how our films are being financed and watched and shown. And though it sounds like as if मैं कोई इंडस्ट्री वाली बात कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन बड़े बड़े बंद कमरों में या छोटे छोटे बंद कमरों में जो डिसीजंस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमारे कमरे में, हमारे फ्लैट में कितने कमरे होंगे. वो डिसाइड करता है कि यार हमारी गाड़ी होगी कि नहीं होगी. वो डिसाइड करता है कि हम गंदा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एटलीस्ट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. सो दीज आर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस, एंड ओवर द लास्ट 3 to 4 years I have seen people suffer incredibly, and I have seen mental health deteriorating in Mumbai deeply. I have seen people traumatized, I have seen people go through psychosomatic problems, and I have seen generally people being very isolated, people getting lonely, and people having nowhere out, and suddenly turning bitter and negative. And therefore when they meet, they start gossiping instead of doing shop talk. Even shop talk doesn't happen today. कि तूने वो शॉट कैसे लिया, तेरे को कौन सा ट्रैकिंग पसंद है, ये वाला, तूने वो कट कैसे किया, तूने वो साउंड डिजाइन कैसे किया. We are never talking about that. We are not gossiping. We are not gossiping about who's seeing who and who's which studio executive is doing, saying what, or whatever. So if we keep doing this, we will be cannon fodder. And you must know this. And if we continue doing and showing the same response to this state of affairs, then we'll be extinct or we'll be destroyed. Our souls will be destroyed. So on this happy note, I invite you to sort of come in and have a very core discussion about how to survive and deal with the core existentialist issues, which are sometimes a little boring to talk about, because we are not talking about the script, so we are not excited. But we have to find a way of getting engaged and excited in a productive way to discuss how to survive, and to discuss how not to be isolated, and discuss how to have some kind of a collective life, so that our own soul is not the only source to draw the energy from, but we are drawing the energy from a collective that is somehow struggling to survive. And that's what I think. After 20 years, when मेरे भी बाल सफेद हो गए, मैं कह सकता हूँ 20 साल मैंने भी इस इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, and all of that. After all of this, I used to be a terrible individualist. I used to be an egotist. I used to stay in my own hole, and I used to look down upon the whole world. And things are changing. And अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, और अभी बहुत मतलब पापड़ बेल लिए. So we must
I must invite all of you people to ask core questions, to discuss core existentialist issues, and see if that can help in us feeling a little more upbeat about writing that script or thinking about that film tomorrow. All yours. So I wanted to ask that because I've worked in other fields and then moved to filmmaking, one observation I've made is I'm not seeing another field that is as moneyed and glamorous and yet this disorganized and centralized. Why do you think that is, and do you ever see that changing, and how? Not with Bollywood. It won't change with Bollywood because Bollywood essentially is a tribalistic pattern. And that tribe is, like, look, in the 1910s and 20s and 30s, it were the elite of Maharashtra who had the access to filmmaking, and they got into it, Dada Phalke and all these, other stalwarts. From the 30s and 40s, it were the migrants from Punjab, from Pakistan, Punjab, and they came in and they set up their businesses. And Bombay was always in a migrant city. So it developed, in my opinion, along tribal and kinship lines, which are connected to a feudal system of existence, which are connected to iska mausa, uski shadi us family mein, uska bhai, uske gaon ka wo, iska chacha, iska beta. What we call nepotism is a feudalistic and a tribalistic way of conducting an industry. आज से 150 साल पहले अगर आप अफगानिस्तान में चावल खरीदने जाओगे तो उस गली में सारे एक ट्राइब के मिलेंगे या एक फैमिली के मिलेंगे जो ब्राउन शर्ट करके आपको चावल बेच रहे हैं. वही चीज़ 1930s और 40s में बॉम्बे में हुई और 50s, 60s, 70s में आगे गया. अभी भी हम उसी में हैं. 90s में when we had a brief respite, when things opened up, that's where people like me or Anurag and Vishal and all, we came in from outside and we made a place because the cosmopolitan, urban, westernized, English-speaking studio executive had been born, who was watching Hollywood films and independent Hollywood films and all that, who had some aims of hobnobbing with the stars, but who also had aims of doing something indie, shindy and all that. These people did not put their own money. These people financed the films from tax shelters in Texas or investment overflow from various banks that formed in the 90s as the economy got broadened. Boring तो नहीं लग रहा है ना? ये survival है. So वो जो सारा पैसा था वो इनका नहीं था. वो pension funds, trust funds, mutual funds, various banking instruments का पैसा था जो उन्होंने पास किया. चलो उसको देखो क्या कर सकते हो. वो सारे पैसे पब्लिक इश्यूज में इन कंपनियों ने लिए. उसके बेसिस पे उन्होंने कंपनीज में एग्जीक्यूटिव्स हायर किए जो हमारी तरह हंसराज गए हैं, आईआईटी गए हैं, एलएसआर गए हैं, वेलहम्स गए हैं. काफ़ी हैं हमारे बीच में यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं और काफ़ी लोग हैं जो लोकल भी हैं मेरे जैसे. तो लेकिन हम सब ने स्कूल में वो अंग्रेज़ी वाली पढ़ाई की है, फिल्में देखी हैं, एमटीवी देखा है, चैनल भी देखा है, ऑल दैट. तो इन सब लोगों ने दे स्टार्टेड अप्रूविंग फिल्म्स. Because of them, films like Khosla Ka Ghosla or Devdi or Udan and all those films got approved, and the fact that they were very cheap also. अब उससे क्या हुआ कि इंडी वेव आ रहा है, कंटेंट इज किंग हो गया. अब क्या हुआ कि we were really a danger, and this is my theory, around 2010 when you heard the 100 crore ka hawa for the first time. I think even at that time I felt so that hawa was there so that the feudal tribe could come back. And the essence of that comeback was that this film has done this much business and that is why you should see it. Before that we had never known. Today when I'm in my elevator and going up to my flat and my neighbor meets me, he says, oh, what is the opening? So I said, my opening is closed. So they all know about opening and weekend and all that. So yes sir, this was a very, very effective marketing ploy to tell the audience that you must be the majority.
that there is something embarrassing about watching a film that 20 people are watching and not 100. Therefore, we all started feeling slightly guilty, filmmakers like us, about being minoritarian. And therefore, we were pushed towards a majoritarian existence as the tribe, as the feudal tribe, as the oligarchy came back or tried to come back. It never went away. But now there was a new push. What Bollywood did was that, and if you can see from 2009 and 10, if you see the advertisements, if you see back copies of Sunday Times, Bombay Times, Delhi Times, you can see through the history of film advertising, how film advertising changed, how Bollywood stars suddenly started co-opting the role of national stars. Earlier they were film stars, but now they were becoming national stars. They were all over in advertising. Therefore, when you see the history of marketing in marketing companies like Unilever or Procter & Gamble, suddenly from unknown models who would come in every new film, you started seeing an overflow of the stars in those ads, so that their presence started increasing and increasing and increasing. It wasn't that they were not there before, but there was an explosion. And over the next 10 years, that explosion took the presence of the star to a colossal position without even making them act in films. They went through endorsements and ad films and other things, buying some football club, buying some cricket club, standing in some election, married to some politician marrying some film star. All these things happen. They are elite, they are cream, and we are watching it. But a social media fed us that biography is everything, that gossip is everything, that knowing who's who is everything. And therefore, from the point of view of reading a critic, we went towards, just looking at how many crores a film has made. We must understand that this was a marketing and existential survival move, master move, rendered by Bollywood to come back into prominence, where the star's presence and a certain acceptance of a certain lifestyle and a certain gossip and a certain biographical hubris around the industry will ensure that content no longer will be needed to be above average. So what happens is, when you are free to do nothing better than average, then the mediocrity survives through this tyranny of biography and gossip and the tyranny of the image. You can have six packs as a part of that image. You can have a very thinking hero sitting like this, or a heroine who is in the latest bikini because she's just gone from size 1 to size 0, and that's a major step forward for Indian cinema. So all these milestones distract us into believing that the majoritarian way, the way that is backed by star power, the way that is backed by the individual, the way that is completely negating a collective existence, is the way. And it works on us far more than film advertising. It works on us insidiously. Therefore, Masterclass. One man or woman can come and solve all the problems because he's the master. So this is the way our thoughts and the categories of our thoughts are shaped, so that we never think of the collective, and we are always guilty because we are a minority. We are not okay. We are not asking for more money. We are saying that we are okay, we need survival, and we want to stay here in this small world. But we are told, you're nothing if you're in this small world. What will you do? Come out to this big world. And then slowly your friend starts taking depression pills. Slowly another friend, 42, has a heart attack and dies in the loo.
Slowly another friend goes to Dubai and never comes back. Slowly another friend joins his father's business. Because everything is working around you to ensure that you do not trust the collective existence, that you do not trust and have confidence in being the minority, that you have to belong to the majority just to exist. So this is the flow that you're facing, and in your case, it's much tougher than what we faced in 2006-7. And now you guys have got to grow up and figure out what to do. Otherwise, you're toast. Questions? Did I answer? Any more specific? No. Hi. Is somebody else asking? Okay. Hi. You've explained how the machinery works with social media, the algo, how everything works. Now, adding to that the surveillance that you're facing in the industry, the tight surveillance of क्या censor होना है और क्या नहीं होना है. In regards to that, how do you imagine the future of your films like these, or any film that you make, which you know might not see the light of the day in popular sense? How do you deal with the surveillance? Like you said, like this is a discourse about survival, figure out करना है, कैसे दिखाएंगे, कैसे film बाहर जाएगी. What is your way that you figured out works so far? I thought I had figured it out, but रुक गई ना, release ही नहीं. So मैं आता हूँ उस पे. So I feel that it's very important for us to understand that we must not isolate political censorship by the state as a special case. अगर आपको प्रोड्यूसर बोल रहा है आप 2 ट्रांसजेंडर नहीं दे सकते, आप एक ट्रांसजेंडर लो और दूसरे किसी से एक्टिंग कराओ, वो भी सेंसरिंग ही है. वो सेंसरिंग इसलिए है कि वो प्रोड्यूसर ये नहीं बोल रहा है कि आई वांट 1 ट्रांसजेंडर एक्टर. प्रोड्यूसर को कुछ मतलब नहीं. प्रोड्यूसर एक्चुअली नोज कि अगर हम सिसजेंडर एक्टर लेंगे तो थोड़ा सा गिर सकता है, बट सर आप संभाल लोगे उस बेसिस पे. The producer is doing it because the producer has an uncanny and probably correct approximation of the transphobic, queerphobic, gayphobic, intensely reactionary audience that we cater to day by day and make films for them. That doesn't mean that you go to war with your audience, but it must be necessary for you to understand that that is why the producer is saying this, and that is the. So that's one kind of a censor which the society is put on us. Okay. Now we could have bypassed it if we had alternative modes of distribution. Since the alternative mode of distribution does not exist, you go through the mainstream and its accessory distribution system. Since you go through the mainstream distribution, which is hardwired only to cater to the mainstream, it works as a gatekeeper to not come up against any kind of a societal taboo or societal fear or societal aggression. In fact, it works to pander to every bit of societal aggression, to majoritarianism, to violence, to hate, if that is the mood of the month. Therefore, that censoring is just the same as a state telling the producers, you can't do this, you can't do this, you can't do this, you can't do this, because our agenda is to promote this vision of India. They are saying the same thing. They are dictating. The audience is dictating by not coming to the theatre. So these two aspects make you the minority. Now, कैसे बनानी है, क्या करनी है, क्या है, मेरे हिसाब से 2 रूल्स हैं. एक, change. Make something that panders.
and be happy. And whatever your sadness inside there is, you travel. पैसे आ जाएंगे थोड़े से travel करके आ जाएंगे. The other way to do it is that if you're facing this kind of a censorship from the industry and from the state, which is new, which is why your lot is far more challenged than I was when I started out making films, then you have to learn to make cheaper films. But remember that when you make cheaper films, the majoritarian audience, completely brainwashed into majoritarianism, will look at your small film as a very small film and may not even be looking at it. So you might find a far more restricted audience. You might have a lot less money, but your mental health will be better. So you will have to take any of these two sort of routes, and there are various gradations within these routes depending on how resourceful and how inventive you are. Now when you come to this path, that is where creativity really comes in. And that creativity we are not taught. That makes sense. Thank you. So even after all this, do you still make the film which you want? और इन सब के बाद क्या आप वो फिल्म बना पाते हैं जो आप सच में बनाना चाहते हैं? और अगर आप एक परसेंटेज में डाल के रखें कि आप ये बनाना चाहते थे 100% में से, तो कितना हद तक आप पहुंच पाते हैं फिल्म के अंदर? मेरी बात छोड़ दो, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं एक ऐसे टाइम पे स्टार्ट किया, एक हेडविंड था, एक हवा मिली, उसके चक्कर में थोड़ा रुतबा मिल गया, उस रुतबे के चक्कर में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, उस रुतबे के चक्कर में मैं जब किसी प्रोड्यूसर के रूप में बोलता हूँ, अरे सर क्या बात है, उसे पता है कि मेरी फिल्मों का पैसा नहीं बनने वाला, लेकिन एक रुतबे के चक्कर में रूम रिस्पेक्ट, हाय दिबाकर आई लव यू फिल्म बोल के ऐसे ऐसे करके, वो चाहे प्रोजेक्ट होए ना, उसको बस मिलना है ताकि बोल दे कि मैं मिल लिया हूँ, तो मेरा रुतबा बन चुका है, मेरे को ब्रांड का फायदा मिल चुका है, क्योंकि मैंने पहले चालू किया था, बस एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, नथिंग एल्स. तो उसके चक्कर में मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया इसी राह में. अब मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ. बॉलीवुड में जब मैंने खोसला बनाया, लकी बनाया, इन्होंने सोचा कि ये तो कुछ करेगा, ये बड़े बड़े एक्टर्स के साथ करेगा. फिर जब कोई बड़े एक्टर की फिल्म लेके आया तो मैंने LSD2 बनाई. वहाँ से क्या हुआ, मैं लोगों की शक्ल में थोड़ी सी एक होता ना कि ये क्या कर दिया तुमने, दैट काइंड ऑफ. सो वहाँ से धीरे धीरे मुझे मतलब लोग मेरे को समझने लगे. वहाँ से लेके 30 तक मेरा ग्रेस पीरियड था. अब ग्रेस पीरियड खत्म हो गया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जितनी फेस लीता था उसका आधा 1/3 लेके बहुत छोटी फिल्म कर रहा हूँ. और साइड में टिपिकल कमर्शियल, मतलब मेरी वाली कमर्शियल कोई फिल्म मैं लिख रहा हूँ, और वहाँ पे मैं ट्रीटमेंट नोट बना रहा हूँ और ढूंढा म्यूजिक बना रहा हूँ, और किसी ऐसे स्टार के पास जा रहा हूँ जो एक यंग मेल स्टार हो, ठीक है, मेल स्टार, और उसको तो यार तेरे पे क्या जचेगी ये फिल्म. अगर वो खा जाए तो मेरे अगले 2 साल की EMI, बच्चों की फीस, ये सब ठीक हो जाएगी. और जो छोटी फिल्म कर रहा हूँ उससे शायद कुछ मिल जाए. तो यू आर ऑलवेज डांसिंग, यू नेवर स्टॉप डांसिंग. कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है. मैं रूट फॉलो कर रहा हूँ, मैं डबल रूट फॉलो कर रहा हूँ. मैंने इनको जो रूट पता है मैं दोनों कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा रुतबा बन चुका है तो मेरा थोड़ा रूम रिस्पेक्ट बन गया, मेरा थोड़ा सा एक्सेस मिल गया है कई कमरों में, जिन कमरों में आज आपको एक्सेस नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर स्टार्टिंग ऑफ. तो मैं उस एक्सेस का फायदा उठा के मैं थोड़ा इधर खेल रहा हूँ, थोड़ा उधर खेल रहा हूँ. मुझे पता है कि दोनों में से शायद एक ही बनेगी. और मैंने घर में ये भी बता दिया कि देखो ये बेच दो, ये बेच दो, ये बेच दो, और फिर ये होगा तो ऐसे कर लेंगे, वो होगा तो ऐसे कर लेंगे. तो दैट्स हाउ यू डू इट. हेलो सर, मैं बात वैसे कल आपकी फिल्म के डायलॉग के रेफरेंस से करना चाहती हूँ. मे बी लाइन्स कैन नॉट बी फुली करेक्ट. जो था कि डायलॉग था कि स्क्रिप्ट में, किताब में सभी बहुत सारी बातें होनी चाहिए लेकिन कोई बात नहीं है. तो हो यही रहा है फिल्म्स में भी, स्क्रिप्ट राइटिंग में, कि राइटर पहली बात तो प्रोड्यूसर्स को उसने कैसे ढूंढना है जो फर्स्ट
वो है जो लिख के अपने अंदर जो आप बोल रहे हो कि आपकी सोल को भी बचा के रखना है, एक्साइटमेंट को भी बचा के रखना है, काम भी करना है और उसको ढूंढना भी है, जाना भी है, डिमोरलाइज होगा, फिर बचा के रखना, कुछ ना कुछ होगा, वो करता है, चलो कोई मिल गया, तो फिर वही बात आएगी, बहुत सी बातें करनी है लेकिन कोई बात नहीं करनी, तो उस पर भी सेटल करेगा, क्योंकि उसके पास उसने एग्जाम्पल्स देखी हुई हैं कि वो सब जिन्होंने कुछ नहीं माना वो फ्रस्ट्रेटेड है, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिन्होंने कुछ कहीं ना कहीं मोल्ड कर लिया वो कुछ ना कुछ कर गए, तो उसको लगता है कि नहीं वो तो नहीं बनना जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, चलो कुछ ना कुछ बात तो हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी, राइटर डायरेक्टर कोई उसमें नाम तो आने लगेगा, तो उसके लिए वो बेयर मिनिमम पे सेटल करता है, उसको जो बात करनी है वो रह गई, खो गई, क्या हो गया, नहीं हो गया, फिल्म हो गई, है ना, तो वो जो बेयर मिनिमम है उसको करते करते वो हमारी कंडीशनिंग भी हो रही है, तो हम उस पर सेटल करना सीख गए हैं, तो उसमें आज के टाइम में आइडेंटिटी क्राइसिस है, एवरीथिंग इज देयर, आज का टाइम भी बहुत कुछ डिटरमिन कर रहा है एक आर्टिस्ट की लाइफ में, तो वो आपको नहीं लगता कि हम बहुत मैकेनिकल हो गए हैं एज एन आर्टिस्ट राइटर, हम सीख रहे हैं, हम उस कंडीशनिंग में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ एक क्रेडिबिलिटी के लिए, लेकिन हमारे अंदर आर्टिस्ट मर रहा है एंड वी आर अग्री विद दैट। वो कौन सा बेयर मिनिमम है जहाँ तक मतलब एक आर्टिस्ट को स्टॉप करना चाहिए और वो कैसे अपने एक्साइटमेंट को बचा के रख सकता है और उसको लगता है कि यार नहीं बात तो करनी है, बहुत सी बातें हो लेकिन एक मेरी भी हो। ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं कुछ शब्द ना, मैं आपने जो बोला उसमें से 90% मैं मानता हूँ, लेकिन 10% ना हमको आपने जो शब्द बोले उन शब्दों को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। आपने कहा आर्टिस्ट, अब आर्टिस्ट क्या देखना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा वो एक और गन मास्टर क्लास है। तो समझ लो कि आर्टिस्ट एक ऐसी चीज है, एज अ थियोरेटिकल एक चीज, कि जो कल तक जो चीज नहीं थी हमारे इमेजिनेशन में, आज सुबह 9 बजे उसने वो दिखा दिया, वो आर्टिस्ट है। जो पहले नहीं थी और जो अब है, जिसने क्रिएट किया, वो आर्टिस्ट है। ओरिजिनल जिसे कहते हैं, अबे ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं है, वो सही बात है, लेकिन ये जो एक फॉर्म है और ये जो कंटेंट है और ये जो एक उसके अंदर हम एक छलांग मार रहे हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आज सुबह 9 बजे इस बंदे ने मेरे को दिखाई, तो ये आर्टिस्ट, करेक्ट। दैट मीन्स दैट आर्टिस्ट वो होता है जिसके आसपास नॉर्मल रॉ मटेरियल सामान रहता है, ईंट, सीमेंट, लोग, जैकेट, कॉफी, पानी, किसी को नींद आ रही है, किसी को बुखार आ रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। सो इस तरह से जो नॉर्मल हमारा जो रॉ मटेरियल है, उससे हम ऐसा कुछ करते हैं जो देख के लगता है अरे ये तो वही है जो हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ और है इसमें, करेक्ट। सब मान रहे हैं, एग्री। अगर ये करना है, इसका मतलब है कि वो नई चीज होगी, फिर एल्गो को पता नहीं होगा क्या करना है, जैसे कोई नई चीज है, क्योंकि एल्गो का काम ही है कि जो पुरानी चीज है उसको फिर से दे। अब ये जब माहौल है और जब प्रोड्यूसर एल्गो की आड़ में छुप के अपने आप को बचाता है ताकि उसकी नौकरी रहे, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे। वो बेचारा किसी टीवी स्टूडियो में काम कर रहा था, कहीं पे काम कर रहा था, कहीं पे धक्के खा रहा था, आज उसको किसी प्लेटफॉर्म में महीने के 4 लाख रुपए मिलते हैं। वो पागल हो जाए कि मैं कहाँ जाऊँ अभी, मेरे को तो और कहीं जाऊँगा तो मैं 4 लाख की सैलरी मिलेगी ही नहीं महीने की। तो फिर वो कोशिश कर रहा है कि वो उस नौकरी में जमे रहे, इसलिए उसे अपने बॉस को खुश करना है। बॉस को खुश करने के लिए क्या करना है कि बॉस अपने बॉस को खुश कर रहा है, बॉस के पास टाइम नहीं है काम का, क्योंकि उसको अपने बॉस को खुश करना है। तो फिर वो एल्गोरिदम, रिसर्च, एनालिसिस, इन सब की आड़ में वो कर रहा है। इस सिचुएशन में मैंने जो देखा है वो ये है कि बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्मार्ट हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार स्मार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म स्मार्ट नहीं है, सब स्मार्ट है। आपको स्मार्टर बनना पड़ेगा। अब उसके पीछे ये देखना है मेरे हिसाब से कि कितने सस्ते में, कितनी छोटी चीज में कितनी बड़ी बात अगर हम कह दें तो शायद वो हो सकता है, उससे आप जीत सकते हो। ठीक है, तो सस्ता बनना पड़ेगा।
लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आप जीतो। अगर आपने धर्मशाला में एक 14 साल का ट्रांसजेंडर ड्रग डीलर की लाइफ पे कुछ बनाने की कोशिश की, तो जो स्टूडियो वाला बोलेगा बड़ा अच्छा है, धर्मशाला अच्छी लोकेशन है, ड्रग डीलिंग, कोई जेंजी आ जाएगा, मजा आएगा। लेकिन एंड तक पहुंचने के लिए जो आपका असली सवाल है, आप क्या नहीं बोल पाएंगे और आप क्या बोल पाएंगे, वही डिसाइड करेगा कि आप कितनी नई चीज बोल रहे हैं। उसको बुलवाने के लिए आपको उसे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो देख गाना यहाँ से कुछ डाल दिया, वो देख प्रोडक्शन वैल्यूज यहाँ से कुछ डाल दिया, डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सीरीज लिखी और हमने चैनल के टॉप बंदे से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने यार ऐसा प्रेजेंटेशन ऐसा सीरीज कभी नहीं देखा, कमाल है। उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि कब कम कमाल दिखाएंगे अपना। 3-4 महीने बीत गए, उस स्टूडियो बॉस के 2-3 राउंड नीचे एक एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने मेल किया कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आप बताएंगे क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें समझना था कि इस कैरेक्टर का आर्क क्या है। मैंने कहा पेज 33 में देख लो, ट्रीटमेंट नोट दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद कभी फोन नहीं आया। इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे कुछ कर रहा है धांधली, भैया इसको मत छुओ, वैसे भी मतलब थोड़ा मतलब गड़बड़ आदमी है, तो उसको मत जाओ उधर। तो इस तरह के गेम्स खेलने पड़ेंगे। बट द बिगेस्ट थिंग इज योर ओन स्मार्टनेस कम्स एट अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम in terms of understanding the issue you are trying to make a film about. उसमें टाइम जाता है, उसमें लाइफ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आई एम कमिंग टू बायोग्राफिकल डिटेल्स, यू कैन सी दैट खोसला का गुस्सा इज अ लॉट मोर सिंपलिस्टिक देन दीस, राइट? इट्स एवरीबडीज फेवरेट, इट्स माई फेवरेट ऑल्सो. इनफैक्ट कल धर्मशाला के रास्ते में एक गाड़ी में मुझे थ्रेड भी मिला. एक गाड़ी जा रही थी, मैंने कहा आप पार्टी हो ब्रोकर? मैंने कहा यार हाय, खोसला के फेम. सर आप खोसला के खिलाफ कुछ मत बोलना, वो रॉन्ग है सर. आप कहते हो ना कि खोसला आपकी पहली फिल्म है लेकिन पूरी आपकी फिल्म नहीं है, वो मत बोलना सर, खोसला के खिलाफ कुछ मत बोलना. तो उसने उसको ऑलरेडी अपना लिया है, क्योंकि हिज डैड इश्यूज आर बीइंग बटर्ड ओवर बिकॉज ऑफ खोसला का खोसला. ही इज नॉट रियली सॉल्विंग हिज डैड इश्यूज. ही इज लाइक क्या सो स्वीट एंड ऑल दैट. कुछ लोग डैड इश्यूज सॉल्व भी कर लेते हैं. एक लड़की ने मेरे को बोला था 15 साल पहले कि आफ्टर द फिल्म आई हैड अ लॉन्ग चैट विद माय डैड, सो दैट्स ग्रेट. सो लेकिन द रियल प्रॉब्लम इज कि ये हर जगह नहीं चलता है, और स्टूडियो एग्जीक्यूटिव समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ स्मार्टनेस हो रहा है. तो शुरुआत कैरेक्टर, ड्रग डीलर, ट्रांसजेंडर, धर्मशाला, रिस्क, क्रॉस बॉर्डर स्लेवरी, ये सब अच्छा हो जाएगा. लेकिन उसके बाद बोलेंगे कांट वी गेट अ फीमेल जर्नलिस्ट who saves this guy, and फिर से ठीक है, मैं क्या शाहना गोस्वामी को ले सकता हूँ? फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि शाहना इज अ फ्रेंड. नहीं यार, गोरी चाहिए, गोरी से. तो फिर वहाँ पे फंस जाओगे, रेसिज्म में फंस जाओगे. जैसे ही आपने बात मानी ना कि मैं ठीक है, मैं कर ला, तो मैं ले आता हूँ जर्नलिस्ट को, वहाँ पे आप फंस गए. इसलिए मेरा टोटका ये है कि जैसे ही वो बोलते हैं मैं स्पेलिंग ना बोल देता हूँ, क्योंकि रुतबा है, थोड़ी सी पावर है, तो वो कैन बी डू दिस, नो. उसके बाद वो वापस नहीं आते. लेकिन आप वो नहीं कर सकते, आपको थोड़ा साइड से जाके बहुत स्मार्टली सोचना पड़ेगा. व्हाट इज एन इशू दैट ड्राइव्स यू द मोस्ट? अभी मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपके दिमाग में कौन सा इशू बहुत टॉप घूम रहा है? मुझे जो लगता है कि जो हमारी जनरेशन है अभी जो करना चाह रहे हैं, सिनेमा, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, तो वो जो एक स्पिरिट लेके निकलते हैं, जो मेन उनका सब्जेक्ट नहीं, वो मैं समझा. सॉरी टू इंटरप्ट यू. आपके दिमाग में पर्सनल जो एक कीड़ा है किसी एक इशू का, वो क्या कीड़ा है? आप बस वो कीड़ा बता दो. वो यही है कि एक तो जो बोरिंग शब्द है स्क्रिप्ट में, डायरेक्शन में, कि यार बहुत बोरिंग हो जाएगा, कौन देखता है, इतना डिप्रेशन है दुनिया में, कौन देखेगा, हंसाओ थोड़ा. हाँ, टाइम को रिप्रेजेंट मत करो कि हम कितने डिप्रेशन में हैं, टाइम डॉक्यूमेंट करती है फिल्म, छोड़ दो. यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है, टाइम को भी रिप्रेजेंट करो, हंसा भी दो.
ठीक है। बस। और अगर आप पहले ना बसा के पहले वही दिखाना है कि भाई हैं हम ये, दिस इज आवर टाइम, लेकिन हम हंस सकते हैं अपनी सिचुएशन पर भी, हाँ, इस टाइम पर भी, हाँ, और हम खुशी भी ढूंढ लेंगे, हाँ, लेकिन पहले नहीं है वो, तो वो बोलते हैं नहीं पहले ही डालो, क्यों फील करना है कैरेक्टर को इतना, मत करने दो। मैं समझ रहा हूँ आप क्या ये बोल रहे हैं कि एक स्क्रिप्ट में एकदम शुरू से कॉमेडी होनी चाहिए। मतलब मीनिंगफुल क्या होता है? ओके फाइन, मैं अगर होता, क्योंकि मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है और मैं कॉमेडी ठीक ठाक कर भी लेता हूँ। मेरे को खुद भी अच्छी लगती है, लेकिन कॉमेडी मेरे को जो लगता है ट्रेजेडी में भी कॉमेडी होती है। नहीं नहीं है। हाँ, तो जो एक रिप्रेजेंटेशन का, जो विजुअल का जो एक नया ट्रेंड बन रहा है, जो मुझे लगता है जैसे सिनेमा देखते हैं जो भी है, कि चीज़ों को इजी करना इज अ गुड थिंग, इजी हमको, लेकिन एक ऐसा इजी करना कि उसमें मीनिंग प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। मैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं सिर्फ 5 मिनट में आऊँगा, इजी एंड मीनिंग। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका पर्सनल कीड़ा क्या है, कौन सा सब्जेक्ट? कि आप जो चाहते हो वो नहीं बना नहीं, आपकी एक फिल्म जो आपका कीड़ा है, मुझे इस पे फिल्म बनानी है। ओके ठीक है। तो मुझे जो फिल्म बनानी है वो है पंजाब के क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के ऊपर, कि बिफोर पार्टीशन देन पार्टीशन, जो बॉर्डर एरिया के प्लेसेस हैं जिन्होंने 47 में भी सफ़र किया, 84 में भी सफ़र किया, अभी जो माइग्रेशन हो रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर सिंगू, एवरीथिंग। वो बोलते हैं कि क्यों देखना है किसी को? नहीं वो छोड़ो, क्यों छोड़ो, अगर कोई क्यों बोल रहा है तो बोलो मैं लिखूंगा। हाँ, मैं खड़ी हुई हूँ इसलिए लिखना है। तो उसमें या किसी भी चीज़ में दिक्कत है कि आज की जनरेशन को ये क्यों देखना है, तो वो मेरा खत्म हो गया ना, मेरा स्क्रिप्ट वो बंद ही हो गया। नहीं, आज की जनरेशन को क्यों देखने का जवाब ये है कि आप थोड़ी दिखाओगे, मैं दिखाऊंगी ना, तो मैं करके दिखा दूँ, फिर वो बोलेगा कि आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन। अगर वो अप्रूव नहीं करेंगे तो मैं कैसे दिखाऊंगी? तो अभी इसमें क्या है कि छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आनंद तिवारी है, मेरे ब्योमकेश में उन्होंने अजीत किया था, अच्छे राइटर है, सोचता भी अच्छा है। तो उसने क्या किया, कोल्यूट करके बैंड बाजा बारात बनाई, बैंड बाजा बारात से, बैंड बाजा बारात से कनपुरिया से ये वो, और मैंने वो कॉमेडी देखी। वो सबसे पुराना इंडिया का सब्जेक्ट है, मैरिज, वेडिंग, हम सब करते हैं, लेकिन उसमें वो जो चीज़ लाया उसको देख के मुझे भी हंसी आई थोड़ी सी। एक्टिंग सब सही कर रहे थे, बहुत सस्ते में बनाई थी एक लोकेशन में, उसके चक्कर में उसकी दूसरी फिल्म बन गई। पहली फिल्म जो आप बनाना चाहते हो उसे आप दूसरी फिल्म मान लो, उससे पहले, लेकिन स्मार्टनेस मत छोड़ना, उससे पहले पंजाब पे बेस्ड एक 100 मिनट की एक फीचर फिल्म जो 1 करोड़ के अंदर बन सकती है, वो बनवा लो, मिल जाएंगे पंजाब में। और उसमें चाहे उसको कॉमेडी बनाओ, लेकिन ऐसी तीखी बनाओ कि कोई लोग उससे मुंह ना मोड़ पाए। तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा था, समझ लो ये बन गई, समझ लो नहीं चली तो ठीक है, चल गई तो फिर आप वो कर सकते हो। और अपने जो है अजीत, अपने टब्बर के जो डायरेक्टर है, राइटर है अजीत पाल, यही लाइफ है, यही लाइफ है। कैंसर, मेडिकल प्रॉब्लम्स, 45 साल की उम्र, कंप्लीटली नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, बॉम्बे में आके मर आके घिस आके टब्बर पूरी की, वहीं से जहां से वो आता है। तो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड यू लुक हियर एंड हैंडल दिस फर्स्ट एंड देन गो देयर। तो मैं कह रहा हूं, आप 1 करोड़ के अंदर एक छोटी फिल्म बनाओ जिसमें पंजाब है, जिसमें आपके इश्यूज है, नेट प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर जब आप लंबा फॉर्मेट बनाओगे तो उसमें आपका जो पहली फिल्म का एक्सपीरियंस है उससे आप और डेप्थ में जाओगे, क्योंकि अगर उनको आउटस्मार्ट करना है तो पंजाब की सबॉल्टन हिस्ट्री में सारे डेप्थ जो है वो आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए, वो आपके एहसास में होना चाहिए। तो उसमें रिसर्च में 3-4 साल लगेंगे। तो तब तक एक छोटी बना लो, सिंगू बॉर्डर पे बना लो, वो भी नहीं बनाने देंगे लेकिन बना लो। Did that help?
हाँ कि वो बेयर मिनिमम क्या है? बेयर मिनिमम, हाँ ओके, वेरी गुड, मीनिंग। ओके, चक्कर क्या है कि मीडियोक्रेसी तभी सरवाइव करेगी जब मीनिंग को हमारी लाइफ से बेस निकाला कर दिया जाएगा। जब मीनिंग बिकम्स एंटी नेशनल, मीनिंग बिकम्स नक्सलाइट, मीनिंग बिकम्स पाकिस्तानी होर, मीनिंग बिकम्स बाल कटी औरत, इन सब चीज़ों को हमारी जिंदगी से पुश कर दिया जाएगा ताकि राइट विंग पेट्रियार्की एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की धाक जमी रहे। ये हम नहीं निकाल सकते हैं। हम बहुत कम हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। सारे व्हाट्सएप अंकल तुम्हारे घर के नीचे ही बैठे हैं तुम्हारी फैमिली में, तो वो नहीं बदलेगा। अभी इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, 10-15 साल लगेगा और तबाही होगी और टूटेगा इंडिया, तब जाके लोगों कहेगा यार, लेकिन तब तक बहुत गलती हो गई होगी, तब तक यू वोंट बी एबल टू करेक्ट द मिस्टेक, यू हैव टू फाइंड अ न्यू सोल्यूशन। तो जो भी है, सो विद इन दैट टाइम you must understand that they are banishing meaning because they are smart. So you have to be smarter to find an inner meaning which अभी तक देखो, लोग मीनिंग के सेवरल लेयर्स होते हैं। हम बोलते हैं माँ 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 माँ, तो एक मीनिंग बन गई, ठीक है। हम बोलते हैं देश देश देश, तो वो एक मीनिंग बन गया। तो फटाक से आप देश बोलते तो टारा म्यूजिक बज जाता है और फिर हम समझते हैं देश आ गया। पहले क्या होता था 70s 80s में, जैसे गुड मुस्लिम फिल्म में आता था, एक मॉस्क का एक जूम आउट शॉट आता था, अल्लाह परेशान, यू नो। बट these are meanings encoded, these are meanings that give us shortcut to storytelling. अब जो नई मीनिंग्स बनाएंगे आप, वो मीनिंग पहले से शॉर्टकट किसी के पास नहीं होगा, तो उस मीनिंग को दिखाने के लिए हमको दूसरी मीनिंग का सहारा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, मैंने खोसला का घोसला की ऑडियंस के लिए चीज बनाई थी, तो मैंने कहा कि अगर मेरे को अदराइजिंग दिखानी है तो मैं वो वाली अदराइजिंग दिखाऊंगा जो मेरी माँ समझ सकती है, विच मीन्स रेसिपी बुक। तो उस तरह से जाना पड़ेगा ताकि लोगों को लगे अरे यार ये तो बहुत टेक्सचरी चीज है, ये तो अंदर से बोल रहे, अंदर से देख रहे। और छुपा के बोलो, कबीर के दोहों में, सारे सूफी दोहों में, सारे भक्ति दोहों में, सारे मिस्टिक दोहों में और उनके गानों में छुपा के बोल रहे हैं। तो वहां से आप सूफिज्म मत लो, वहां से आप आइडिया ले लो। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिया कोई, और मुझसे बुरा ना कोई, तो इट्स अ होल फिल्म। It's a film about an IT cell guy who's sending messages. So these are the ways that you can jump from meanings of meanings and layered meanings and fight as a meaning terrorist, as a meaning Naxalite, to put in and wedge in new kinds of meanings. But you have to bank yourself on the existing meanings and slowly take it to a new meaning. For example, Gregor Samsa woke up one day and found himself a cockroach. Cockroach में meaning है ना? अगर cockroach हमको पता ही नहीं कि slimy है, ये है, वो है, तो हम समझ नहीं पाएंगे उस first line की मतलब। तो उसने पता कर लिया कि cockroach का क्या मतलब है मेरे सारे readers को, और उसने एक लाइन में बता दी। अब वो आगे चल रहा है। कोई ऐसी हिट बुक भी नहीं थी, लेकिन काफका जिया, उसकी किताबें हम आज भी पढ़ रहे हैं। सो दैट्स, इफ यू कैन स्टेप लाइक दैट, मे बी देयर इज अ वेरी shaky way of survival that you will get. Does this help? I just want to indicate we have about 30 minutes, so yeah. Hi Dibakar. Sir. Hello. 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 हेलो हेलो हेलो, दिस साइड सर। एक इसी से प्रोडक्शन से रिलेटेड और फिल्म से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है कुछ। मैं आप पे आता हूँ। ये जो एक फिल्म है हमारे लिए तो 3 घंटे की है आम लेमैन के लिए, पर इस पर कई बार 30 इयर्स की रिसर्च, 3 इयर्स का इसका प्रोडक्शन और इतना कुछ लगता है। और आने वाले टाइम में आजकल जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो फिल्म रिलीज होने के बाद आती थी पहले, आजकल फिल्म रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी फिल्म आ जाती है, जिससे एक इंडस्ट्री को, जो उसके पीछे मैन पावर है, उनको बहुत बड़ा
नुकसान उठाना पड़ता है कि फिल्म नहीं चल पाती। हम भी कभी देखने जाते फिल्म को, दोस्त को कहते हैं कि चलो ये चलते हैं देखने, तो कहते क्या देखना, मैं देता हूँ आपको ना, अभी आपके आ रही है। इस पर आप क्या सरकार से या कुछ कहना चाहिए, कुछ लॉज ऐसे बनाए जाएं जिससे कि स्ट्रिक्टली हो, ताकि एक जो इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है या जो इसके पीछे मैन पावर है उसको भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है जब एक फिल्म, अच्छी फिल्म हिट होने वाली होती है पर लेकिन वो पहले ही पायरेटेड आ जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अदर मोड्स के थ्रू। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे इससे कुछ खास पता नहीं है क्योंकि मेरी फिल्में कोई पायरेट होके नेटवर्क पे नहीं आती तो कुछ ऐसा है नहीं। देखिए, थिएट्रिकल ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। हमने बड़े बड़े और बहुत महंगे महंगे मल्टीप्लेक्स बना के हमने अपने स्टार्स को 50 करोड़ 60 करोड़ के फीस देके और अपनी फिल्म को 150 करोड़ 200 करोड़ की लागत बना के हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। और अब थिएटर में वही फिल्में चलेंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस फिल्म को बनाने में 1000 करोड़ लगे और इस फिल्म को 5000 करोड़ की टिकट सेल्स हुई है। अभी जो 5000 करोड़ पहला 5000 करोड़ 1 नंबर आपका है, आप आ जाओ। तो ये हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। प्लेटफॉर्म में क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म की मोनोपोली ये हो गई है कि प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं कि यार हमारा ये एक्टर है, हमारा ये स्क्रिप्ट है, हमारा ये है, आप लोग ऐसे बनाओगे तो हम बनाने देंगे, नहीं तो नहीं बनाने देंगे। अब क्या है कि प्लेटफॉर्म जब आए थे यहाँ पे, उनका काम था प्लेटफॉर्म में कंटेंट एग्रीगेट करना, समझ गए। उबर ड्राइवर है, ओला ड्राइवर है, आपने उसको बुलाया, आपने कहा कि मैं चर्च गेट जाना चाहता हूँ और वो ड्राइवर बोल रहा है चर्च गेट क्यों जाओगे यार, वही चलते हैं और इस पैसेंजर को ले लेते हैं और कपड़े बदल के आओ। तो ये हो रहा है प्लेटफॉर्म्स में कि हम जा रहे हैं वहां पे कि तुम्हारे पास रैक्स है फिल्म रखने के लिए, मेरी फिल्म रख दो, जिसको देखना वो देखेंगे। वही तो था ना प्लेटफॉर्म वही तो था ना कि सारी फिल्में चली गई। अब जिसकी जो किस्मत है वो अपनी आजमाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वहां पे बैठे हुए बोल रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, इसको नहीं इसको दो, इसको नहीं उसको दो, उसको नहीं उसको दो, ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर लाओ, इसको एक्टर बनाओ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो पायरेसी वायरेसी इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं आजकल, मुझे तो नहीं लगता। आपका Hi Dibakar. So we touched upon a lot of things today from a filmmaking side. I'm a person very interested in the movement of capital, and a lot of problems that you talked about earlier stems from the movement of capital, right? So essentially, the person who controls the capital dictates, and we also alluded to nepotism, entrenched industry, and things like that. One takeaway I have about the industry is that there are two kinds of capital. One was is on the production of the movie side, and second is on the distribution side. I feel that production is still perhaps an easier problem to solve because there's enough capital out there. But do you think there is room for people to enter and figure out the distribution side of things in today's landscape? See, India has one of the lowest per capita screens in the world. Its per capita screen pairs of ice creams, I'm talking about theaters, is lesser than Germany. We make the largest number of, कोई fact check कर लेना, I mean, we have the largest number of films being made in the country, but we have the smallest number of theaters, okay? Now, compared to that kind of a volume. Now, when you compare the north with the south, the single screen, the theatrical is still working. So I feel what we have done is that as capitalism, neoliberalism and all other things have come in and created a huge inequality in our society, one of the things that has done, that it has achieved also successfully, is that it has also created inequality in terms of access to entertainment. Therefore, if you are poor, you cannot go into a multiplex. Therefore, if you are in a small town, a film might come just for a day or something like that. Therefore, if you're a family who's waiting for a children's film to come, and husband, wife, 2 kids want to go, by the time you make the plan, the film goes. So therefore what is happening is that we have an extremely horrible choke jam at the point where people get to see what they want to see. One simple example is, आज अगर आप कोई 80s की कोई थ्रिलर देखना चाहें तो आप दुनिया में ऐसी कोई दुकान नहीं बची जहां पे आप जाके उसकी डीवीडी ले सकते हैं।
अब फिल्म की डीवीडी भी नहीं मिलेगी। अब मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा या एम्स्टर्डम जाऊंगा और किसी पुरानी दुकान में मेरी फेवरेट फिल्मों की डीवीडी लूंगा, वो भी पॉसिबल नहीं। अब मुझे वही देखना पड़ेगा जो मुझे प्लेटफॉर्म दिखा रहा है, और बाकी सारी फिल्में मुझे फिर से पायरेट में देखनी पड़ेंगी, जो मैं 2004, 2003, 2002 में देखता था। और मैंने एक शो में बोल भी दिया था कि ये तो मैंने पायरेट पे देखा है, तो मुझे थप्पड़ पड़ गए कि तू यार खुद फिल्म मेकर है, तू पायरेसी की बात क्यों करे। मैंने कहा पायरेसी से करूं, मेरे को दिखेगी एग्जाम फिल्म। Piracy is just an answer to lack of supply. Piracy means that there is more demand than there is supply, or there is more demand for variety than there is in the market. तो ये सारी प्रॉब्लम हमने खुद की बनाई हुई है। अगर आज सिंगल स्क्रीन रहता, आज अगर धर्मशाला में 5 सिंगल स्क्रीन होते, जहाँ पे एक हिमाचली फिल्म चल रही हो रही है, या कोई हिंदी फिल्म चल रही है, या 2 दिन के लिए कोई बाहर की कोई फिल्म आ गई, चाइनीज फिल्म आ गई या नेपाली फिल्म आ गई, क्यों नहीं देखेंगे लोग? वो इसलिए है कि वो सिंगल स्क्रीन ही नहीं है भाई, वो जगह ही नहीं है। और दूसरी बात है कि फिल्म जैसे ही हम बनाते हैं, हमारे दिमाग में आ जाता है ऑडी आ गई, चारों तरफ सिक्योरिटी आ गए, उसमें से डायरेक्टर निकल रहा है, फ्लैशिंग हो रहा है, फिर रेड कारपेट में जाके वर्सोवा के किसी टैकी से पब में कुछ हो रहा है। फिल्म बनाना हमने कभी देखा ही नहीं है कि हम गली के वहां पे जाके सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देख रहे हैं, वो हमने देखा ही नहीं है। हमने कभी नहीं देखा कि अरे यार वहां का वो मनीष है ना, उसकी फिल्म उसने बनाई है, धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल चल रही है, चल जाके देखते हैं। तो जो फिल्म बनाना है वो हमसे दूर हो गया है, उसके साथ बॉलीवुड का स्टार पावर, बॉलीवुड का ग्लैमर जोड़ दिया गया है। हम जब कहते हैं कि मैं एक छोटा कैमरा लेके नॉर्मल काले लोगों के साथ मैं फिल्म बना रहा हूं, वो फिल्म ही नहीं है। जब तक उसमें गोरे लोग ना हो, जब तक उसमें ऑडी ना हो, जब तक उसमें हेलीकॉप्टर ना हो, जब तक उसमें कुछ ऐसी चीजें ना हो जो बहुत एलीट हो, क्योंकि हमने भी बॉलीवुड में फिल्मों को टूरिज्म बना दिया है। आप ये फिल्म देखने आओ तो आपको लास वेगस की सैर मिलेगी, आपको हिमाचल की सैर मिलेगी, आपको ये वाले कपड़े दिखेंगे, आपको ये वाले गहने दिखेंगे, क्योंकि बिक भी तो रहे ना, वो कैटलॉग भी तो है ना वो फिल्म। वो जो फिल्म के पीछे स्पॉन्सर्ड बाय सच एंड सच ज्वेलरी, सच एंड सच शॉप, सच एंड सच थिंग, उसका कुछ मतलब है। तो क्या हो रहा है कि कहानी, दिखने वाली कहानी को हमने विज्ञापन बना दिया है और पड़ गया। अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञापन वाले जो सेठ है, अब वो बैठ गए, अब उन्होंने गला दबोच लिया है, अब और किसी तरह से कर नहीं पाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो चक्कर है, ये सॉल्व होगा, तब जाके हम लोगों को थोड़ी सी सांस लेने की आजादी मिलेगी, वरना यही मास्टर क्लास करते करेंगे। Hi sir. Do you think filmmaking is a full-time sustainable career? कि साइड में कुछ ढूंढ लेना चाहिए। घर वाले बोलते रहते हैं बेटा ठीक है करते रहो बिजनेस ज्वाइन कर लो, ये अच्छा चल रहा है लेकिन बिजनेस ज्वाइन कर लो, पैसे कहाँ से आएंगे? डिपेंड करता है आपका डेली खर्चा कितना। That's true. But even for the basic amount, मतलब खाने पीने का ही पता लो। नहीं मतलब देखो, अगर समझ लो आप हिंदी फिल्म बनाना चाह रहे हो, ठीक है, और आप दिल्ली में हो या मेरठ में हो, और आपको पता है कि आपकी फिल्म फेस्टिवल में जाएगी, ठीक है, और कहीं नहीं जाएगी, फिर आप साथ साथ कुछ करते रहो, लेकिन वो मत छोड़ो, क्योंकि वो इसका एडजंक्ट है। समझ लो आप किसी मैगजीन में लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको उस मैगजीन के लिए ऑनेस्टली लिखना भी पड़ेगा, लेकिन Sorry to interrupt. I mean documentary films. No, I know. I mean, To make the super niche. Sure. To make that documentary film, let us say, you are working in a film company as a production executive, or you are writing for some magazine, or you're teaching in a school. You have to double it up. Then you will have to do yoga and walk every day, and make sure that you work for 20 hours and not lose your physical energy. That after your day job, you come back to your edit. Okay? Then you'll have to figure out a way where your personal life gives primacy to your work. Therefore, you should not marry. You should not have kids. You should be alone. You should have a partner who understands this and who's on his or her own way. These are the real life decisions you need to take to be able to make documentaries and do something
and also never have money. But be happy. So it's inside you. Did it help? No? Sort of. क्या कह रहे हैं? अमीर आदमी से शादी Huh. That's a very good way. You could. I mean, you're a woman, and if you could make a kind of an uneasy truce with patriarchy and find a partner. How to find the balance between all the intersections. It's a dance. You have to be aware. I really hate dancing. No, you have to. Otherwise, how do you make your documentary films? You have to. You have to say, okay, boss, I'll make this tryst with patriarchy. I've got this guy who is in finance, who works in a bank. I'm serious. I know people like this. Who works in a bank, and I could get married to him, and he's decent. Okay, he's okay. He won't get drunk, and he's not passive aggressive. And ये सब हो जाएगा. And maybe you can find something there. Maybe you will not find that pure love, but maybe you will make 5 documentaries. But you will have to make that choice. It's a living, walking choice. I'm here taking a choice. My 10-year-old, she won't do her math class. And she'll do worse in school. But I'm here. You'll have to make those choices. I'm serious. Yeah, I understand. Sir, are all rich men patriarchal? Yeah. How can we answer? I had a That gentleman. Can I just ask a question and then? Sure. Yeah. So here in the front. Idhar. So I'm an architect and an actor, and the first time that I went to Bombay and when I looked at the city itself, because the infrastructure of the city is aspirational. It has high rises which are also selling the idea that success is this. And It's both aspirational and crushing. Yeah, At the same time. Yeah. Every point. So in that sense, I just want to understand what your opinion is about success, because even as a filmmaker or an actor, when I go to a city, we are always wanting to be the next so-and-so. Let's say we want a journey like Shah Rukh Khan, or because the idea has been sold to the audience and the filmmakers and actors in that sense. So I want to understand what you think. How can we make the quality of life better at the audience level, infrastructurally or with films and with laws, so that even when we watch a film, with laws I'm saying, that when somebody is also watching a film, they understand that it is a film, but like how do we break capitalism is probably what I'm also trying to understand. Because it has, yeah, like I because it feels when you're in that, like when I was in Mumbai and I'm from Hyderabad, there's so much lack of space and people are living in such tangi and still are aspiring for an Audi and a car which does not fit on the road, which is illogical. And yet we as filmmakers want to reach that level. So See, you're the first actor who spoke up, and it's a slightly different problem than being a writer or a director or a documentary filmmaker. What an actor does, where you're fundamentally different from me, is that in 1 year you can have 5 gigs. In 1 year I can only have 1 gig. So that way you have a better chance of surviving. Now coming to acting. Why do you want to act? You want to become famous? I'm asking. No. Sure? Yeah. Then what's the problem? My opinion because of my study as an architect also. I also write films and I want to make films at some point. And I have written a feature-length film and I also want to direct it at some point. And I feel like for me to have an opinion about infrastructure and what people think of quality of life to be as is so like the dichotomy of it, of what we aspire to be, but then I get you. In your house also you have that and you're still complaining about it. Sorry to interrupt you. This is new data. So I'm kind of, I'm reconfiguring. I thought you were an actor,
and you were asking how to survive as a successful actor, my answer would have been that why do you want to be an actor? You would have said, I want to be famous. Then I would say, do this, 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 this. And if you said you don't want to be famous, then I say, do this, 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 this. Okay? From my experience, what do you think? But if you're an actor who wants to direct and write eventually, my suggestion is that for the first 3 to 4 years, become a moderately successful actor. Get some bank balance. Also, you would have done 3, 4, 5, 15 films or series or whatever. You would have been in many gigs. You would have seen the process of those films getting made. You would make friends and connections who are on the other side of the camera. You will make observations about how a film is shot and how a film does to connect the relationship between what you're doing on the set and what's happening on the parda. So this is an invaluable experience. So my suggestion, totally focus on acting. And totally focus on that acting which defines for you being an actor. Why do you want to be an actor? I don't want to be famous. Why do you want to be an actor? Otherwise, it is not fame. Because I think I want to be everything, and I want to play every character as possible. Yeah. So basically, it fulfills you to climb out of yourself and be someone else. Very good aim for a director, for an actor. I think you can survive on this for the next 3-4 years. But don't get into directing and writing immediately. Focus fully on acting. What happens is that recently I got in touch with, I'm a card-carrying atheist, I got in touch with some spiritualists. There is one common thing that I learned. They said that the path is that long and you have to take various Baisakis and various tools to keep going from A to B to B to C to C to D and all that. That works in every path. Your first Baisakhi should be your urge to act, your honest urge to be many people, which will show on screen. If you like what you're doing, you'll come out. And audition like hell and work for 3-4 years, get a name, apne aap bana lo. So you will be in a better position than her. Documentary filmmaking, I mean, I have many documentary filmmakers, so I know what the situation is. That's why I want very basic money. I'll be happy. I understand. Please know that I know what you're going through and respect. Does that help? Hi. Hey. I have a question that's very, it's going away from the practicalities of this moment, but it's a question to you a couple of years ago maybe, is there's this adage that says, write what you know. And I know we're not allowed to go to your films, but I'm going to go for a hot second to the fact that it's evident at some point you were writing what you know. And I'm not talking to you now because I know you have the access and the team to research, etc. But at how much reach, if you're writing, should you have outside of your social location, and how important is it to actually write what you should know as opposed to write what you know, and how do you kind of deal with the doubt of the fact that what you know isn't enough and what you know is almost banal and not going to speak to an audience when you're making films hopefully for at least one other person. Do you make films for you as an audience, or do you make films for, I don't know, the hypothetical audience when you write? That's 2 questions. So it's actually many, but no. The first question is cogent. I get it. I'll answer the second question a little later because it's a simplistic answer, because it's a personal answer. The first question, this is my considered theory. All of you who have 5,000-6,000 to spare, pay for or have a friend and pay for Masterclass. वो जो बाहर वाला जो Masterclass एक कोर्स आता है ना, सारे फिल्म राइटर्स को छोड़ दो, सीधा सलमान रुश्दी के Masterclass पे चलेगा. उसके कुछ 15-16 उसके episodes where he's talking about writing, and he attacks exactly the same question: what is it that you know and what is it that you don't know? And he says that, and I also am saying that, and you can see it in my work, Khosla, Oilaki, LSD, to some extent are things that I knew from my own lived experience. When I go to Shanghai,
Of course, I had a lived experience by then, a surface lived experience of living in Bombay and understanding, how the political subaltern scene works over there. But I had to do huge research into what are the means of repression and suppression that the local state machinery and the local police machinery employ to create isolation in a trade union or in a popular. So वो सीखना पड़ेगा कि समझ लो धर्मशाला के सब लोग आगे उन्होंने वो किया कि हम this is what we stand for and the state does not want it. How does the state break that public social thing? That needs to be researched. So for that, from your third film, fourth film, where you know enough about human nature, but you are taking that human nature into various canvases, it's better to read lots of books and try and see if you can wrest the film away from your experience on a book or a story or a newspaper article which has been written by somebody who knows that. So your knowing and his or her knowing merges to create a new step. By that time, because of the first 3-4 films that you've done, and because of the mistakes you've committed, and because of the successes you have, now you are understanding what's lying beneath the Punjabi accent. Now you are understanding what's happening or what's residing beneath the Jat accent. Therefore, क्या कर रहा भाई पूछ फाड़ लेगा. अगर ये लाइन है घोसला का घोसला में, बहुत हंसी वाली लाइन है, it comes from my lived experience. 3 films down the line, you realize where that goon comes from and what is he saying, and you don't need to resort to your knowledge of Hindi, Punjabi, Jatness and Delhi life, and you can go to Latur, and by that time you've developed enough understanding of what a political gunda does to write a story about a political gunda. But again, you merge your knowledge with somebody else who's been working on that. A book. I solidly recommend that stand on the shoulders of books. This is another masterclass about how script writing and whatever we are taught on script writing is so wrong and is so damaging and is so pat and is so elitist and is so bougie, is so stupid that and we are so in it all the time that we do not realize. And the answer on what to do lies here. A book that you've never read, a story, a fiction, a Hindi story that you've never read, so or an English story that you've never read, but you read it and you realize that it's solved कर दिया है, तो इसको लेता हूँ ना मैं. So you have to go and meet other points of knowledge to make your knowledge more practical and have a little more strength when you're slightly bored about your own milieu. मैंने बोल दिया यार, अभी मेरे को और पंजाबी एक्सेंट और ये वो जाट शाट हो गया, मेरा निकल गया. अभी मेरे को फिल्में बनानी है लेकिन मेरे को दूसरे कैनवस चाहिए. तो उसके लिए you have to merge. It's a collective experience. It's a collective process. What happens, like, your identity is... Sorry, I think the question is also that we often go into social locations that are not ours and usually in the hierarchy of things below ours. And what happens when you're co-opting those identities to be the writer you want to be, and somewhere that's like an exploitation that is uncomfortable, because if you write what you know, you're just writing about your milieu and you're not kind of taking away the opportunity of someone else to tell a story of that milieu. And I'm not saying I have any access. I'm saying the assumption is that everyone at various points has different types of access. And how did you sort of battle with the fact that, I know you answered this question yesterday about talking about Kashmiris when you're not Kashmiri, but that's because now you have that rutba. That could not have maybe been... No. That was not because of rutba. That was because of 1 year of research by these documentary filmmakers, Shabani and Sabreen. In fact, I wish they were here because many of you know them. Right now, they would have told you that how long it took for us to figure out the knowable and the unknowable about the events of 89 and 90 in Kashmir.
So you have to invest in that time. I'm not trying to shy away from the time. I'm kind of talking about the internal battle of taking on stories of moments of locations that are outside of yours. Well, the thing is, I am making a film about othering, right? I'm thinking in the Indian context, knowing from what I know, from a bougie middle class point of view, what will I write about othering? I'm not a Muslim family, don't come from a Muslim background, okay? Now, let us say I'm an urban Muslim, okay? Then I start talking to a lot of urban Muslims and take my time, 1 year, 1.5 years, whatever, start speaking to some writers, start reading some other shit, you know? For example, when researching the Huma track, I read an anthology by a Pakistani gay writer, a book called The Love That Knows No Name. वो हमारे बीच में गे लव की जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, उसके बारे में बोल रहे थे. तो उन छोटेपन से, छोटी कहानियों से एक पिक्चर बन गई कि मिडिल क्लास में ऐसा होता है. आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास. नाउ because of my knowledge about middle class, I can connect the two. You know what I'm saying? So that is one way. The other way is that I want to make a film about othering, and because I feel that Kashmir is a burning issue of othering and tragedy, I say, okay, I'll take up Kashmir. Now the thing is that I'm not in USA, I'm in Delhi. And I was there when the Pandit, camps were formed in Delhi. And I have Kashmiri friends. My co-producer is a Kashmiri who's from Srinagar, who lives in Bombay and is a filmmaker, and goes to the gym every morning and is married to a Punjabi, and he's like cool, so he's genuinely cool. So then I start talking to him, and then I start figuring out the varieties of anger. You need to have that category, right? You're writing about otherizing. You are middle class, bourgeois, Bengali, Delhi, Bombay, you're writing about Kashmir. So I do not want to take the story that resides in a village in Poonch. Not yet. I would rather take a middle class household in Srinagar and then extrapolate that family's journey to middle class Bombay, which is a function of neoliberalism. Huma's character believes she's a lawyer. She is a corporate lawyer. She works for Shah Rukh Khan. She's like us. And from there, I go to the future. So what I'm trying to say is where you are can find connects with various places which are similar to you but not where you are. And it's forming that web that defines knowing. Because then you know that this is universal and this is the specific manifestation of the universal. But mothers are mothers. Recipe books are recipe books. Jealousies are jealousies. So you take the universal and you go through the path of the specific, and that specific, if it doesn't come from a lived experience, has to be researched in two ways. One, information, and two, feeling. What were the feelings that resided within that space where the story was being told? That's what we did. That's all I know. Done. Khatam. Nikal gaya sara. Thanks. Just since it's a one-line answer for your audience or for you, who do you like? See, I used to know this earlier, now I don't know. I used to know this answer, now I don't know. Now it's like, if I stop making films, I don't know, nothing else to do. So I'm hustling, surviving, making the next film. We were talking with another filmmaker, so she said, where does life go? I said, yoga walk, next film, yoga walk, next film, yoga walk, next film, there. That's all I know. Hello, sir. I think we're just at time, but maybe you have time for one more question, or Yes, I'll ask this question. Hi, I'm Abhirupa. So we discussed the business, we discussed the market. I love that we had such a practical point of view also, even though we got into the deep existential parts. But there is this subjective existential question I have, because it took me so long to admit that I want to get into filmmaking, considering how unorganized the field is. And we all traditionally had a romanticized view of film, right? Nobody got into it thinking about distribution and producing. So, at what point does
do you get the conviction that I want to tell this story? Because I constantly feel like I'm waiting for someone to give me an approval that I'm a filmmaker. And, I just feel like, if there's a story worth telling, if I confide into, a couple of friends and I tell them about it, they go like, oh yeah, your story is amazing, but when do I know that, yes, this is ready to go out? My suggestion is to read and not see. See little and read a lot of stories. Therefore, you will come to some kind of an understanding, which all good writers have, of the fundamental architecture of storytelling as connected to human consciousness. They will also talk about that. You will also get to know about the fundamentals of story and structure as connected to time. Therefore, once you, I can see that you're a little puzzled, but what I'm trying to say is that before you decide whether you are giving yourself the eligibility to write a story, you have to, or make a film, you have to know story first. Some people know it instinctively. They are the great writers. But they have started when they're 14, 15. They've gone to English literature class. They are teaching assistants. They teach literature. From there, they get their own material, they learn and they build above that. Then they work on their first novel for 5 years, then it fails. Then they work on their second novel for 3 years, then it succeeds. I'm talking about Drishti. So that's because that's the latest I've read, and many other such examples. Okay. Therefore, another famous writer, Borges would write 5 articles in a day, newspaper के article लिखते. तो लिखते practice करते ही story writing जान पाते हो आप. So therefore, my suggestion is to read a lot and to write a lot for a year, knowing that मैं अभी कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं भी बस अपने आप को तैयार कर रही हूँ. ठीक है? उससे क्या होगा, अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग आएगी. फिल्में मत देखना, किताबें पढ़ना, किंडल पढ़ना, स्टोरी पढ़ना, ग्राफिक नॉवल पढ़ना, चुटकुले सुनना, फोक सॉन्ग सुनना, गाना सुनना, जहाँ से भी आप आए हो उस रीजन का फोक सॉन्ग सुन लेना, उस रीजन का कथावाचन सुन लेना, महाभारत पढ़ लेना, रामायण पढ़ लेना, 1001 अरेबियन नाइट्स पढ़ लेना. फोक थिएटर क्या होता है, फोक टेलिंग क्या होती है, फोक टेल्स क्या होते हैं, वो देख लेना. उनके अंदर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं वो देख लेना. तो अगर वो 1-2 साल अगर उसमें चले जाए, और वो बहुत एक्साइटिंग जर्नी है, प्रोवाइडेड यू गेट एक्साइटेड बाय दैट, अपने आप जो कहानी निकलेगी उसके बाद उसमें ऐसा कुछ होगा जो आप इतनी बड़ी बात ऐसे कर लेंगे. कहानी इज लाइक कारपेंट्री, प्लीज अंडरस्टैंड. एक भी जॉइंट नहीं दिखना चाहिए, लेकिन कुर्सी पे बैठ गया. कुर्सी दिखनी चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए. जितना ये दिखेगा उतनी बुरी कुर्सी होगी. जितना एकदम कारपेंट्री नहीं दिखेगी लेकिन कुर्सी दिखेगी, उतनी अच्छी कुर्सी होगी. तो उस कारपेंट्री को छुपाने के लिए हमें ये सारी विधाओं को सीखना पड़ेगा, जो हमको बॉलीवुड नहीं सिखाता. बॉलीवुड सिखाता है कि 12वें पेज पे इंसाइटिंग इंसिडेंट होना चाहिए और 36वें पेज पे सेकंड लॉक होना चाहिए और 72वें पेज पे ये होना चाहिए. गलत है मेरे हिसाब से. Did it help? Yeah, a lot. Oh. आपका सवाल भी इम्पोर्टेंट. ओके, वैसे सवाल तो वही है कि पार्टियों की ब्रोकर, बट आप ही ने कहा था ना. हाँ. तो जैसे इनको बात लग गई कि घोसला के खिलाफ मैंने कैसे बोला, जबकि मेरी अपनी फिल्म है. तो इनके दिल में वो फिल्म बसी हुई है. लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि मैं आज से 15 साल पहले मैंने जो फिल्म बनाई है, मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है. मेरे पिताजी के साथ 15 साल पहले जो रिलेशनशिप था अब वो बदल गया है. मुझे अभी अपने घर से निकलने का गिल्ट नहीं है. मेरे अपने बच्चे हो चुके हैं. तो मैं उसकी घोसला की तरफ, मेरा एक ही फिल्टर होगा, नॉस्टैल्जिया हो सकता है. So my question is something else. Yeah. तो personal कर सकते हैं ना. It's like, because like I wanted this question for the audience also.
कॉग्निटिव बायसनेस जो अपनी होती है और एंगर एंड डिप्रेशन, आई थिंक ये आप LSD और इसके बीच में गए हो बहुत जब ये बनाई है आपने, और मुझे लगता है वही मेन चीज़ होती है जो हमें हमारे बैरियर्स हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक मूवीज. तो हाउ वन शुड डील विद दैट, हाउ यू हैव in your past dealt with that? It has to start with anger. It has to start with depression. It has to start with a feeling of being isolated. But when you start channelizing that into a story, it becomes freeing. It becomes your therapy. So that's what you have to go through. Now I'm not as angry. Do I look angry? No. 4 साल पहले मैं एंग्री था. अभी इतना एंग्री नहीं हूँ. मेरी तो फिल्म भी रिलीज नहीं हो रही. मैं तो फंस गया हूँ इतना पूरी तरह से. एंगर नहीं है क्योंकि कर ली ना. वो रास्ते में जाके जितनी मरवानी थी मरवा के मैं आ गया यहाँ पे. सो दैट हेल्प. सो डू नॉट गो अवे फ्रॉम द एंगर दैट यू फील. डू नॉट गो अवे फ्रॉम द आइसोलेशन दैट यू फील इफ यू वांट टू मेक क्रिटिकल स्टोरीज. If you want to make stories that, how shall I put it, reinforce, re-establish, then do that. But क्या reinforce करना चाह रहे हो, क्या re-establish करना चाह रहे हो, वो देखना पड़ेगा. क्योंकि अगर आपने शहरों की कैपिटलिज्म दिखा के, आप लास्ट सीन है गांव में कुछ गांव वाले फोक म्यूजिक करके नाच रहे हैं, वो उस फिल्म का एक एंड हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में आपने कुछ सॉल्व नहीं किया. तो फिर वो देखना ही पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम कहाँ पे है. वरुण ग्रोवर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आजकल एक फिल्म में मैं एक औरत को अगर कास्ट करूं तो पेट्रियार्की रखना इजी है. इट्स फार मोर डिफिकल्ट टू शो अ वुमन इन अ फिल्म एंड नॉट शो पेट्रियार्की. तो वो पेट्रियार्की के साथ ही जाना पड़ेगा. तो ये जो चीजें हैं हमारे सोसाइटी में, ये अगर आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो वो वाली फिल्म बनेगी जो हिट होगी, जो सब देखेंगे. वो आप बना सकते हो, लेकिन आपको बार बार पता चलेगा कि मैं जो कहना चाह रहा था मैंने नहीं कहा, मैंने थोड़े से झूठ बोल दिए, मैंने थोड़ी सी बटरिंग कर दी, मैंने थोड़ा सा पैंटरिंग कर दी, मैंने थोड़ा सा चापलूसी कर दी और मुझे 50 करोड़ मिल गए, मैं खुश हूँ. वो खुशी अगर आपके अंदर बरकरार रहे तो आप जरूर वो फिल्म बनाइए. लेकिन अगर आपके अंदर कुछ एंगर है या कोई क्रिटिकल रिस्पॉन्स है, उसके थ्रू आप एक कहानी बना रहे हैं, तो फिर वो क्रिटिकल रिस्पॉन्स की थेरेपी होगी वो फिल्म. Hopefully. Such a inspiring and also humbling note to kind of end on that. She's saying we're done. I think we could go on for at least 3 more hours looking at how much is in the room. Real last. Thank you a lot. So, sir, I have a very practical question, which is extension to the question that the lady asked. Yes. So, I work as a screen copywriter in advertising. So, it's more of a counsel and less of a question. So, first question is, how did you shake off the tag that you are established कि भाई ये तो ad वाला writer है, ये ad वाली कहानी बताएगा, तो let's just इससे थोड़ा shy हुए रहते हैं. Hide your identity. Hide your identity. Don't tell them you work in an ad film agency. I said, so many writers I have. So first they write praising my work. Yes. Then they send the script. So, but they don't tell me that they are from an advertising agency. It's not a big problem. Don't worry about it. But like, so I started working in advertising because I thought पैसे मिलेंगे इसमें. responsibility and you are at one arm's distance towards filmmaking, right? Yeah. You can jump. Me. Exactly. Me. हाँ, तो आप वन आर्म डिस्टेंस पे हो और अगर आपका मन किया आप ट्रांजिशन कर सकते हो. नाउ आई कट टू नाउ 6 साल हो गए एडवर्टाइजिंग में. छोटे बच्चों की टीम बड़ी होती जा रही है और मैं आज भी सपना ही देख. छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ था. मैं 97-98 में मैंने अपनी कंपनी बनाई एड फिल्म मेकिंग की. मैं सबको बोलता रहता था इम्प्रेस करने के लिए कि मैं फिल्म बनाऊंगा, फीचर फिल्म बनाऊंगा. 2002 तक चले गए, मैंने पैसे बना लिए, फिल्म नहीं बनाई. उसके बाद जब एक दिन धक्का लगा मेरे को, मैंने अपनी कंपनी छोड़ दी, मैंने अपना स्टेक बेच दिया और मैं जयदीप सानी के साथ घुस गया. और उसके बाद अगले 4, 5, 6 साल तक मैं अपनी बीवी की कमाई पे जिया. तो शादी कर लो. और एक्सटेंशन कॉर्पोरेट डील कि मेक सेंस.
but like people have responsibilities, and I'm the sole breadwinner of my house. I can imagine. So now when I'm looking for jobs as a creative producer or stuff film executive में ऐसा कुछ भी, तो it just feels like I have to start as an intern because the market is so like I can't find it on LinkedIn. No. Can you suggest? Don't. See, you're working in an advertising agency, सब कुछ सही चल रहा है. You work in an advertising agency, start spending your evening hours. So first of all, get disciplined in advertising. Don't go for those drinking chicken parties and all that. वो सुबह से लेके शाम तक 7 बजे तक काम करो, खत्म करो, घर आओ. Start enrolling script writing courses, the good ones. Start enrolling in writing courses, not script writing courses. Start enrolling in story appreciation, understanding, whatever I said. It will take you 6-7 months to a year. उसके बाद write your first script. That writing of the first script should be another year. So next 2 years, you focus on getting more money in advertising and taking out more time in the evening to study and practice. Your homework है. Don't join a studio because पागल हो जाओगे. Because it's becoming more intensive. I started as an intern, now I am a group head. I just hate the job. Like honestly, it pays the अच्छा ये new data है. Everybody बाद में कोई बोलता मेरे job मेरी मैनेजर और मेरी जूनियर भी इसी पैनल में है. So I don't really care because they do it too. See, मतलब मैं ये पूछना. So you are saying that the job that you have is giving you stress? Not really. It's just that I just feel like it's caging me. Of course it's caging you, but you're preparing to break out, ना? वो 2 साल तो लगेंगे ना, अचानक थोड़ी हो जाएगा. 2 साल लगेंगे. वो सबसे बड़ा जो सिटीजन केन 24 साल की उम्र में ऑर्सन वेल्स ने बना दिया और बहुत बड़ा जीनियस था. उसने भी रेडियो प्लेस किए थे यार, उससे पहले हजारों रेडियो प्लेस किए थे. वो थिएटर का बंदा था. आप तो एड फिल्म देख रहे हो. आपको सीखना तो पड़ेगा ही ना स्टोरी टेलिंग. तो 1-2 साल लगेंगे. यू डोंट वरी. यू चेंज योर जॉब, बट डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर. एंड यू हैव टू नो अबाउट स्टोरी टेलिंग, एंड दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मास्टर क्लास विच इज स्टोरी टेलिंग. वो अलग चीज है. एक और सवाल मेरे पास माइक है. सॉरी. हाउ डू यू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग डिप्रेस्ड? थेरेपिस्ट भैया. थेरेपिस्ट चाहिए. और मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया, पैसे ज्यादा है, तो मेरा थेरेपिस्ट मतलब जितनी ज्यादा फीस दोगे उतना अच्छा थेरेपिस्ट मिलेगा मेरे हिसाब से. थेरेपिस्ट या वो दूसरा क्या होता है? नहीं, जो दूसरा मेथड होता है ना. अरे यार सब करते हैं. मैम गेटिंग अल्जाइमर. PDB क्या बोलते हैं? CBT. हाँ. So start with CBT because that will kind of take the reality of your existence, and a good CBT therapist will give you certain totkas to keep reinforcing your need to come back to your writing and studies in the night without fucking you up. And definitely do not drink too much. So क्योंकि the week goes if you drink. I'm sounding like an uncle, but if you drink, the week goes. You can smoke. Don't drink. Thank you so much, Dibakar. So Very specific note. Dibakar sir.